Hey, hi, good morning, guys. I hope everyone is doing good. It's a weekend and meet my new drone. तो आज मैं इसका ट्रायल लेने जा रहा हूँ. I just purchased this DJI Mavic Mini. So just to show you around and then we'll just quickly go to fly this drone. So these are the propellers और इसके साथ ये आता है गार्ड भी आता है, propellers guard. तो आई थिंक आप अगर फर्स्ट टाइम उड़ा रहे हैं तो गुड कि अगर आप ये गार्ड लगा के उड़ाएं because propellers are tend to they're very delicate actually. So I know there are a lot of unboxing videos and all that. If you want to just check for DJI Mavic Mini, you can check it, but I just want to quickly show around and then we'll hit and we'll go to some place where we can fly this. So ये देखिए ये जो कैप है, ब्लैक कैप, दैट्स द हेड वेयर द यू हैव कैमरा. ये है पावर बटन एंड दीज आर द सेंसर्स, टू ब्लैक डॉट्स विच यू सी. ये है सेंसर्स. तो ये जो है ब्लैक कैप, दिस इज़ द मेन कैमरा. इट्स अ गिम्बल विच यू हैव टू रिमूव उड़ाने से पहले. तो नथिंग मच, आई थिंक एज आई सेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम हियर, बट जस्ट एक क्विक वॉक अराउंड देना बनता है क्योंकि दैट्स अ गुड गैजेट. अगर आप कुछ सोच रहे हैं लेने का तो दिस इज़ अ गुड गैजेट बिकॉज आई चेक रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग. सो ये है बैक साइड वेयर द बैटरी गोज़ इनसाइड. सो आपको ओपन करके दिखाता हूँ. सो ये है जो मेरा ड्रोन है, ये है DJI Mavic Mini फ्लाई मोर कॉम्बो. ये है जो मैंने लिया है. So it's a difference between the normal Mavic Mini and Fly More Combo Minis. You get extra batteries here, so which is good at times. तो आज देखेंगे कैसा है इसका टाइम, कितना टाइम में बैटरी ख़त्म होता है, ये सब वही मैं चेक करने जाऊँगा आज. ये है आपका बैटरी चार्जर. तो इसमें एक साथ आप 3 बैटरी चार्ज कर सकते हैं. ये भी इन बॉक्स एक्सेसरी ही है. तो मेरे को एक 2-3 घंटे लग गए थे पूरा तीनों बैटरी चार्ज करने में, क्योंकि पूरा नया बैटरीज है इसलिए. और ऑफ कोर्स आपको जो ड्रोन है वो भी चार्ज करना पड़ता है थोड़ा इनिशियली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं. तो ये है सॉकेट बटन बैटरी के, जहाँ पे आप अपना अदर कुछ और भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो एज अ यू कैन कनेक्ट दैट. ये ऐसा है इसका रिमोट. सो इफ़ यू सी डाउन, ये हैं आपके कंट्रोलर्स और जॉयस्टिक के साथ आते हैं. यहाँ से जॉयस्टिक निकाल के आपको फिट करना पड़ता है. एंड दिस इज़ वेयर यू कैन कनेक्ट योर फ़ोन. तो ये सब मैंने कनेक्ट करके रखा है क्योंकि मैंने रेडी रखा है, बट ऑब्वियसली आप अगर आपको लेना है या आप सोच रहे हैं तो यू हैव द मैनुअल एंड एवरीथिंग. सो ये है एंटीनाज एंड ऑल good. And this is a power button. So I think that's much. This is what it is overall. ये box बहुत ही अच्छा box है, good quality box which I get. And you can use this as a flat surface also. बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर. कुछ वायरिंग आपकी चार्जर्स एंड एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और स्क्रू ड्राइवर छोटा वो सब आता है. So cool. I think you can check these videos. All this will be there. Lot of videos are there in YouTube. So just check it out. So let me go. So today I'll go to Hasarghetta Lake, which is near to my house. So that's again an open space. काफ़ी अच्छा एरिया है. तो let's go there and try this out. All right, so we are going to almost reach Hasarghetta Lake. So it's hardly like 15-20 minutes drive from my house. It's towards north Bangalore. So if anybody is aware Hasarghetta Lake, that's good. If you're not, then you can just type in Google Map Hasarghetta Lake and you will come to this place. So there is a very big horticulture I think institute is there. जो यहाँ पे पूरा एरिया उसी का है, तो काफ़ी ग्रीन एरिया है. एंड if you see left on the left hand side there are tomato farms and on the right hand side also there are some farms. So पूरा एरिया वैसा ही है, काफ़ी सारे फार्म्स है. आई थिंक मैंगो फार्म है ये on the right hand side.
सो जस्ट मैं आदि दोनों निकल गए हैं अभी, तो लेट्स, बिकॉज आदि सुबह से पीछे पड़ा था कि लेट्स ट्राई एंड फ्लाई द ड्रोन. सो या दो देर इज इट्स लिटिल क्लाउडी, और थोड़ा बारिश अभी जस्ट हुआ है. इफ़ यू कैन सी ऑन द बोनट ऑल्सो यू कैन सी सम ड्रॉपलेट्स. सो आई होप कि बारिश ना हो या हवा ना आए, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो हम लोग उड़ा नहीं पाएंगे ड्रोन. बट दो थोड़ा सा सनशाइन था, सो मेरे को लगा कि मे बी बारिश रुक जाएगी. अभी तो फ़िलहाल रुकी हुई है. ओके, सो वी हैव रीच्ड. लेट मी जस्ट पूरा सेटअप कर दूं और डायरेक्टली आपको ड्रोन का वीडियो दिखाता हूँ. राइट, सो वी आर ऑल सेट. ये देखिए, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, तो आई एम जस्ट चेकिंग कैसा कंट्रोल्स हैं, एंड आई विल ऑल्सो शो यू. सो दिस इज़ हाउ फ्रॉम 50 feet इट इज़. सो क्लैरिटी इज़ गुड एक्चुअली. 50 feet से इस तरह का क्लैरिटी इज़ रियली गुड. आई एम नॉट डूइंग 2.7K वीडियो येट. इट्स जस्ट द नॉर्मल जो ड्रोन का है. अभी कुछ सेटिंग्स नहीं किया है मैंने, और मैंने सेट किया है डिस्टेंस 2000 मीटर्स का. सो उसके बाद, क्योंकि आई जस्ट वांट टू बी सेफ, आई डोंट वांट टू गो इन एंड देन पहले थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाऊँ, उसके बाद इसको फ्रीली उड़ाऊँगा. तो ये देखिए व्यू, नॉट बैड. दिस इज़ अ मिनी ड्रोन एंड nicely capture. Even I think, see the textures and everything is really good. Very nice. आज थोड़ा क्लाउडी है, नहीं तो हसरघट्टा लेक में लास्ट टाइम भी आया था, बहुत अच्छा सनसेट होता है यहाँ पे. आई होप कि आज दिखे, इसलिए मैं शाम के टाइम आया हूँ. बट क्लाउडी है तो सन तो दिख नहीं रहा, बट थोड़ा सा लाइट है. बट दो नाइस. So it's good. It's already 2-3 minutes are over, and I still have a lot of battery left. So let's try it more. So there are 3 modes actually: P mode, S mode, and C mode. So I am right now on C mode, which is cinematic mode. तो थोड़ा इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो है, अपने आप ही स्लो रहता है. अगर मैं स्पोर्ट्स मोड पे डालूँगा तो इट विल बी लिटिल फास्टर. बट लेट्स सी फर्स्ट. अभी तो बहुत कुछ है देखने के लिए. इसमें क्या क्या है आई डोंट नो, बट आई एम सेटिस्फाइड रियली गाइस. आई मीन, एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो फिल्टर हियर, टू बी ऑनेस्ट. लाइक जस्ट लिटिल बिट मैंने कॉन्ट्रास्ट और ये थोड़ा सा इधर उधर सेटिंग किया है, बट नो फिल्टर्स एज सच. Look at the view, amazing. और ये 50 मीटर्स की हाइट पे ही है. आई थिंक उससे ज़्यादा प्रॉब्ली वी मे नॉट गो, बट देन यू कैन मैनुअली चेंज दैट. बट अगेन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेकिंग द रिस्ट्रिक्शंस, डूज एंड डोंट्स बिफोर फ्लाइंग अ ड्रोन. अमेजिंग क्लैरिटी. Wow. Let me just leave you with some more visuals here.
unreal, like very nice quality. Adi is so happy, you can see. बहुत मज़ा आया इसको. बहुत सारे काइट्स और ईगल वॉट एवर यू से अट्रैक्ट हो रहे हैं ड्रोन की तरफ. सो मुझे थोड़ा नीचे ही उड़ाना पड़ रहा है. आई डोंट नो, कहीं एकदम से कम एंड किस द ड्रोन एंड नीचे गिर जाएगा. तो इसलिए आई एम जस्ट लिटिल वरीड. सो अभी 2-3 मैंने देखे जो ड्रोन के आसपास उड़ रहे थे. राइट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो. और कुछ और वीडियोस भी मैं डालूँगा और कुछ नए लोकेशन के साथ डालूँगा. तो अभी तो फ़िलहाल आज जस्ट मैं टेस्ट करने आया था. सो आई एम हैप्पी विद दैट. लेट मी सी कि और क्या क्या इसमें फैसिलिटी फंक्शंस हैं एंड फीचर्स हैं. But quality wise, no doubt, DJI is best if you want to buy a drone. And happy with the purchase. Right, so I think that's all for now. It's going to little rain. I see already drizzling. So we'll see you guys soon. Thank you so much for watching. I'll just leave you with some more shots here. Thanks for watching, guys. Please subscribe and press the bell icon so that you can see my next videos as well. Thank you.